नमस्कार, स्वागत करते हैं सायंकालीन सत्र में। सायंकालीन वंदना, अर्पण एवं प्रारंभिक वंदना। योऽसो भगवानहं सम्मा सम्बुद्धो स्वाक्षातो येन भगवता धम्मो सुपठिपन्नो यस्य भगवतो सावकसङ्घो तन्मयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्घं इमे हि सकारे हि यथार्हम् आरोपिते हि अभिपूजयामि साधुनो भन्ते भगवा शुचिर्परिनिपुतोऽपि पश्चिमाजनितानुकम्पमानसा इमे सकारे दुःखतपन्नाकारभूते पटिगणः तु अमहाकन्दिघरतं हिताय सुखाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि अन्धमयं बुद्धस्य भगवतो पुब्बभागनमकारं करोमसे नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। अब हम अगले 5 मिनट बुद्ध धम्म संघ गुण को रिपीटेड पढ़ेंगे, एक मेडिटेटिव स्टेट में रखने के लिए खुद को। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषदम सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पश्यको औपनयिको पच्यतं वेदितव्यो वियूहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो समीचीपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गला तेषु भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो
विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषदम्भ सारथि छत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनयिको पच्छतं वेदितव्यो विञ्जुहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुक्कला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति इति पिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो वेज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषदम्भ सारथि सत्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनयिको पच्यतं वेदितव्यो विञ्जुहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुगला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति ऐसे है वे भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध प्रज्ञा और आचरण से संपन्न सुगत एवं लोक ज्ञाता मनुष्यों को संयमित करने वाले अनुपम सारथी देवों और मनुष्यों के शास्ता भगवान बुद्ध जो धम्म भगवान ने भली भांति समझाया स्पष्ट दिखाई देने वाला कालातीत अन्वेषणा को प्रोत्साहित करने वाला अंतर्मुखी करने वाला प्रत्येक प्रज्ञावान को व्यक्तिगत रूप से अनुभव होने वाला है धम्म के मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ धम्म के मार्ग को सीधे प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ धम्म के मार्ग को ज्ञान पूर्वक प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ धम्म के मार्ग को निष्ठा पूर्वक प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ जो हैं चार युगल और आठ प्रकार के आर्य ऐसे हैं भगवान के श्रावक संघ वे हैं भेंट देने योग्य आतिथ्य के योग्य दक्षिणा देने के योग्य और नमस्कार के योग्य वे हैं इस लोक में अतुलनीय पुण्य क्षेत्र
इसके उपरांत मैं सेशन को गीतालाल जी को हैंड ओवर करता हूँ। ओवर टू यू गीता जी। धन्यवाद निखिल जी। बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, लेट्स पे आवर रिस्पेक्ट टू भंते महापन्यू। 3 बार नमन करेंगे। नमन, नमन, नमन। आप सभी का स्वागत है एक बार इनसाइट शेयरिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। टुडे भंते महापन्यू जी विल शेयर हिज पीस ऑफ विजडम। He was ordained as a bhikkhu in 2019 July at Wat Pah Pong under the lineage of Ajahn Chah tradition. Before his ordination, he was known as Arpan Sharma. तो इनकी धम्मा जर्नी की शुरुआत हुई थी 2004 में. From that time till now, how he has evolved and what is his learning in Dhamma and how what is the shift in all aspects of life, तो उसकी चर्चा या उसकी समझ पेश करेंगे भंते जी। और 2012 में 2012 में वो धरसर के संपर्क में आए। उस टाइम से वो धरसर के संपर्क में रहे हैं टू डीपन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ धम्मा। 2015 टू 2017 उन्होंने थाईलैंड विजिट की थी और उसके बाद 2019 वो अनागारिका बने एंड देन ही वाज ऑर्डेन्ड। पर्सनली मैं भंते महापन्यु को एक ही बार मिली थी एज अर्पण in 2019. So I had seen his dedication and while he was with Ajahn Amru. उसके बाद में इन 2022 जो भी ये चैंटिंग अभी हम कर रहे हैं विद अ स्पेसिफिक रिदम, जैसे एज पर थाईलैंड ट्रेडिशन, अजान छा ट्रेडिशन, ये सारा उन्होंने ही हैज स्ट्रीमलाइन दिस एंटायर चैंटिंग स्ट्रीमलाइनिंग एंड ही यूज्ड टू कोऑर्डिनेट विद एवरीबॉडी। और उसके बाद में जो भी रिसोर्सेज जो बैक एंड में हो रहा है, ही इज बीन सुपरवाइजिंग एंड आई थिंक मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि महापन्यु जो नाम रखा है तो शायद उन्हें ये सोच समझ के ये नाम मिला होगा बिकॉज ही इज नोन फॉर हिज शार्पनेस एंड मेमोरी। कई बार हम जब डिस्कशंस होते हैं तो ऑल द टाइम लाइक हिस्ट्री इमीडिएटली बिफोर वी कुड रिकॉल द सेशन, लाइक वासा सेशन हो या आनापान, ही विल इमीडिएटली पुट इट इन द चैट बॉक्स कि ये लिंक है, please go through this, or to, this time this was the discussion and this is how it was, and he will also send a mail ki ye pad lena. So I personally feel that he is known for his sharpness and memory. One more thing, a small thing what I want to say is I'm completely moved by Bhanteji's gesture today. See, he has a student, he gave a complete rehearsal of what he is going to speak. तो मुझे ऐसे लगता है कि he is not only only a good student can become a very good master. So over to you, Bhante ji. Okay, Geeta, thank you. You have to keep your speaker a little close because Okay, we can yeah, hardly hear yeah, you. Yeah. okay, okay. Yeah, I'll be mindful and maybe also speak a little bit louder. निखिल, मैं I have a little display है ना, आप मुझे दिखा सकते हैं। So मैं ऐसे करने वाला हूँ, मैंने कुछ बिंदु लिख के भी रखे हैं। तो वो फाइल सक्षम ने वेरी काइंडली, हाँ देयर इट इज। सो यू आर वेलकम टू आल्सो ओपन इट योरसेल्फ। मैं एक्चुअली हुआ ये कि जब गीता ने बड़ा अच्छे तरीके से उसको स्ट्रक्चर करके मुझे भेजी ना ईमेल के ये पॉइंट्स हैं, तो मैंने जब वो सोचना शुरू किया उस दिशा में तो लगभग पूरी जो स्पिरिचुअल जीवन की वो है वो सारी आ गई। सो आई हैव पुट ऑल ऑफ दैट डाउन हियर, और क्योंकि हमारा भी समय सीमित है ना, आई लिमिट माई सेल्फ टू sort of some of the specific paths, and so you're welcome to look at the other paths there, plus मैंने कुछ links वगैरह भी लगा दिए हैं just in case some of those resources are helpful. Okay, okay, is that good enough? Does that, yeah, I think it's visible, right? अक्षर ठीक है, मैं अक्षर थोड़े बड़े करूं? Readable. Okay. सो जैसे कि हमें सिखाया गया है, हमारी प्रथा है, और एज इज़ अप्रोप्रिएट जब भी हम इस तरह की कोई भी शेयरिंग करते हैं तो पहले हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि इट्स नॉट एनीथिंग पर्सनल। और सो सो आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज जो ये लिनिएज ऑफ टीचर्स आई है, जिनके वजह से जो भी थोड़ी बहुत समझ बनी है वो संभव हो पाई है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बुद्धा
to Ajahn Chah, and then more recently to, of course, Dhar Sahab, who's been our principal uh, teacher, coach, guide, and Ajahn Kevli and all the other monastic teachers that I've had. And then, as the Buddha himself says, the obvious gratitude to parents, जिनके वजह से ये परिस्थितियाँ बनी हैं आज जो भी थोड़ा बहुत धर्म में संभव हो पा रहा है. And most significantly, जो भी क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं जो इस पाथ पे चलने के लिए संभव करती हैं, वो कार्मिक एंसेस्टर्स के एफर्ट्स और पुण्य के कारण हैं. So to also acknowledge whatever effort has been put in by previous holders of this consciousness. What I'll do is I'll maybe do a very quick, some of these Gita covered, कि किस तरह से what has been the journey more or less. So like many of you, my introduction was also via the Vipassana courses. और ऐसा हुआ, पर हालांकि काफ़ी समय था, एंड मोरलेस आई डिड अ फेयर हैंडफुल, पर इन सम सेंसेस कभी, जैसे हम कहते हैं ना, कोलोकियली घंटी नहीं बजी. And I was always looking for something broader, which became available through conversations with Thar Sahab, who had just by then, I think, resigned from the main organization and had time on his hands. तो काफ़ी उनसे बहुत डिटेल में चर्चाएं होने लगी 2012 ऑनवर्ड्स. और उस समय पे फॉर्चुनेटली राजेश और दीपक, और उस समय एक और सज्जन होते थे, रमन, दे हैड स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस ऑफ मीटिंग हर संडे को. इनके घर पे सुबह हम मिला करते थे. इन फैक्ट दो सेशंस स्टिल कंटिन्यू, and I think those were very rich grounds for beginning to understand some aspects of dharma. And by then, Dhar Sahib had already begun to introduce us to the teachings of the Ajahn Chah lineage and so on. और तो उसके चलते कुछ मौके मिले, और मैं 2015 में सबसे पहले वाटपन अनाचात गया. और उसके बाद लगभग हर साल कुछ कुछ विजिट्स मेरी वहाँ बनती रहीं. आई वॉज ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि 2016 में जब अजान अनेक यहाँ आए, तो अजान केवली इन्वाइटेड मी टू जॉइन दैट पिलग्रिमेज. सो इट वाज 16 very rich days, and brought me very, very close to the monks there, and fairly senior monks. तो उस सब के चलते जैसे लाइफ कंडीशंस कंड्यूसिव हुई, और ऐसा लगा कि इट इज़ नाउ पॉसिबल टू परहैप्स गिव वन सेल्फ फुली टू दिस. 2018 में आई स्टॉप्ड वर्किंग फॉर्मली एंड आई मूव टू थाईलैंड एंड वाज ऑर्डेन्ड, जैसा कि हमारा सिस्टम है, एज एन अनागारिका. और करीब 4 साल मैं वहाँ रहा थ्रू माई अनागारिका, समनेर, एंड फर्स्ट टू वासाज एज अ भिक्खू. एंड आफ्टर दैट लुम्पुर लियम के ब्लेसिंग से और अजान केवली की गाइडेंस से 2021, बाय द एंड ऑफ 2021 मैं वापस इंडिया में आ गया, मेनली बिकॉज माई पेरेंट्स वर गेटिंग क्वाइट एल्डरली. तो वहाँ पे टीचर्स की ये समझ थी कि अभी उचित यही रहेगा कि उनके कुछ करीब रहा जाए. जैसे मैंने सीखा इस दौरान, जो मैंने अभी यहाँ शेयर किया, एक चीज़ मुझे काफ़ी जल्दी क्लियर हो गई कि जो एक भाव होता है अतन्युता का, टू नो वन सेल्फ, वॉज क्वाइट क्रूशल अगर हमें इस धर्म जर्नी में कोई मीनिंगफुल कदम उठाने थे. तो इसलिए मेरा काफ़ी फोकस रहा इस बात को समझने के लिए कि भाई पलड़े किस तरह से हैं, व्हाट आर द एफर्मेटिव्स एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल संखारास. और ये जो फ्रेज है प्रोमिनेंट संखार, ये काफ़ी अर्ली इट बिकेम क्लियर टू मी कि उस तरीके से अगर एक डायरेक्टेड तरीके से काम किया जाए, देन ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल टू do something with it, versus sort of blundering around and doing something, so to say. So then I can see quite clearly कि कुछ तो karmic gifts हैं, कुछ affirmative qualities available हैं, and principle of those I can see, it seems to me, is an absorbent mind. जिस तरह से वो wholesome factors में describe किया जाता है, something that's malleable, जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी चीज़ कही जाती है, सामने आती है, कोई कहता है या पढ़ी जाती है, दैट इज़ क्वाइट कॉन्ट्ररी टू वंस ओन कंडीशनिंग, आई नोटिस कि it's possible कुछ resistance हो, but ultimately it is possible to absorb it. And for me that has been a very big gift, continuously to be able to not just in spiritual life, but also in normal worldly life.
And then obviously energy, virya, very very significant. And finally I can see कि कई अच्छे कर्म रहे होंगे in the past जिनका पुण्य की वजह से आज conditions more or less मेरे लिए बार बार काफ़ी conducive रहती हैं. And of course the other side of the palda जो मुख्य संखार हैं, mainly I think through these conversations with Dharsa, but also looking at some texts, ये काफ़ी clear हो गया early on that the principal thing to work on was what is in the Visuddhi Magg described as the dosh charitra, or an aversive tendency, या जिसको कभी कभी fault finding mind कहते हैं. So it became quite clear कि भाई that's where the principal work has to be. वेरी इंटरेस्टिंगली जो एनर्जी वहाँ पे गिफ्ट लगती है, अब क्योंकि जब वो एक्चुअली इट्स इन एक्सेसिव प्रोपोर्शंस एंड सो दैट इट ऑफन टेंड्स टुवर्ड्स रेस्टलेसनेस, सो इट आल्सो बिकेम क्लियर कि भाई इसको बैलेंस करना ज़रूरी रहेगा, ज़रूरी है. और उसका एक सबसेट है ये जो मैंने लैक ऑफ एप्लीकेशन लिखा है, कि जो फैक्टर हम चित्त का कहते हैं ना, अप्लाइंग वन सेल्फ टू समथिंग, दैट इज़ क्वाइट अ चैलेंज, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. सो दिस वाज बेसिकली द sort of the playing field जिसके साथ जर्नी करनी थी या करनी है और की जा रही है. So अब what I'll do is okay, so इस playing field के साथ what became obvious to me, well it didn't become so obvious, पर ये जो मैं मेन प्रैक्टिसेस और सब्सिडियरी प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये इवॉल्व हुई हैं. ये अभी एट दिस पॉइंट जो मेरी करंट स्थिति है, दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग. It wasn't like this in the past and almost certainly it won't be the same in the future. But currently मेरा एक जो मेन अप्रोच रहता है जो फॉल्ट फाइंडिंग माइंड है उसको हैंडल करने का, वो ये है कि जो प्रिंसिपल वॉइस इन द माइंड है, जो किसी भी वस्तु के प्रति ओपिनियन, आइडिया, व्यू है, उसको कुछ हद तक डिस्काउंट कर देना. बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट द संज्ञा उस पर एक लेयर लगा रही है जो सेंस कॉन्टैक्ट है, एंड दैट लेयर इज प्रोडोमिनेंटली fault finding or aversive in character. So to mainly discount that, and of course that is only possible if there is a certain amount of stillness available. So right now, in fact, my main focus is to enhance samadhi, enhance collectedness, and enhance that stillness. That is what makes the rest of the journey possible, especially in the case of the sort of conditions that I have in my own mind. और फिर कुछ सब्सिडियरी प्रैक्टिसेस हैं जो मैंने खास करके अजान मुनिंदो के साथ मेरे काफ़ी क्लोज रिश्ता है. सो आई अंडरस्टैंड दैट अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स ही आल्सो रिकमेंड्स एंड दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल. अब मैं उसमें आता हूँ. द की थिंग दैट गीता वाज सजेस्टिंग दैट वी डू दीज सेशंस अराउंड, कि वो क्या ऐसी मुख्य चीज़ें थी या हैं जो कि धर्म में इंस्पायर करती हैं या जो कि फ्यूल देती हैं जर्नी के लिए. सो आई हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई 5 सच मेजर थिंग्स, और मैं इसको क्रोनोलॉजिकली मैंने कोशिश की है शेयर करने की. So जैसे मैंने शेयर किया, I used to have a lot of these conversations, very intense discussions, and in one of them Dharsab dropped this line that the search for happiness is the cause of unhappiness. Now it sounds quite straightforward, isn't it? But at that time it seemed to be the perfect thing for me to hear. And I can remember कि at that उस समय से एक very significant shift आया attitude में, and also the approach towards dhamma, and actually the approach towards life in general. So I would consider that to be a very significant watershed. और उस line को मैं अभी भी I retain it, and it's often a go-to for me. इसी तरीके से जब मैं 2018 में once I moved to Thailand, जो मेरी एक छवि थी कि चीज़ें ऐसी होंगी या ऐसी होनी चाहिए, नेचुरली एज इज इनएविटेबल, वो इस तरह से नहीं थी. और तो दैट वाज ऑफन अ सोर्स ऑफ कंसिडरेबल डिफिकल्टी एंड सफरिंग उस दौरान, स्पेशली उस अर्ली समय में. एंड देन इन वन ऑफ आवर कॉन्वर्सेशंस देन धर साहब अगेन ड्रॉप दिस रियल जेम कि जो मोनेस्ट्रीज हैं या ट्रेडिशंस हैं वो भी एक तरीके से संखार ही हैं, कंडीशन फिनोमिना है. तो ये सोचना कि वो परफेक्ट होंगे या उनमें कोई अबाइडिंग सेटिस्फैक्शन होगी, ये फिर मूर्खता की बात है और फिर खुद ही सफ़र करेंगे. तो अगेन उस एक लाइन की वजह से जो एक तरीके से मोनास्टिक लाइफ का रुख है वो काफ़ी एनरिच हुआ, एनहांस हुआ, बदला.
और तब के बाद कोई सिग्निफिकेंट मुश्किल नहीं हुई वाटपा नानाचात में और फिर वाटपा पोंग में जब मैं गया, जहाँ पे कि कंडीशंस अगेन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी, जो हम सामान्य रूप से स्टिलनेस फ्लोइंग वगैरह में पढ़ते हैं। पिछले साल एक और इस तरह के का पेनी ड्रॉप मोमेंट आया जब हम अभिधम्म की कुछ डिस्कशन कर रहे थे, एंड देन ही ड्रॉप दिस लाइन कि ये सारे सेंसफियर विज्ञान जो है वो विपाक चित्त हैं। And it seemed to be the perfect thing for me to hear at that point, क्योंकि I think there was still some sense of unsettledness हो जाया करती थी with परिस्थितियाँ as they would present themselves. But that line at that time almost seemed to be exactly the thing that I needed to hear. And again, it brought about a very significant shift कि किस तरह से मैं spiritual life को, but life in general को जीता हूँ या देखता हूँ। एंड द फोर्थ एस्पेक्ट दैट आई फाउंड वेरी वेरी अगेन, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, वो मैंने ये देखा है कि धर साहब को जो मैं 12 साल हो गए जानते हुए, और फ्रॉम द पॉइंट ही हैड कम आउट ऑफ द विपस्सना ऑर्गेनाइजेशन and the willingness and the ability to let go of something that जिसमें कि उनका करीब 15-20 साल का एसोसिएशन था, इन स्पेशली एक आई वुड रेकन इमोशनल इन्वेस्टमेंट था, उसको छोड़ पाना। फिर जैसे उनकी अपनी डॉक्ट्रिनल समझ और बढ़ी, एक्सपीरियंस बढ़ा, तो मैंने देखा कि जिस तरह के डॉक्ट्रिनल एजम्पशंस उनके हुआ करते थे, उनको भी वो अम, छोड़ने में सक्षम हुए। अम, जिन जिस तरह के टीचिंग्स या स्पेसिफिकली इंडिविजुअल टीचर्स वो फॉलो किया करते थे, उनको दिक्कत नहीं हुई ये बात अपने अपने आप में कन्फ्रंट करने में और फिर शेयर करने में कि मुझे ऐसा अब नहीं लगता, हालांकि मुझे पहले ऐसा लगता था। तो किसी एक व्यक्ति के प्रति आदर बना रहे, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हम, अगर हमारी समझ अपनी इवॉल्व हुई, अपनी समझ बदली है, तो हम डॉगमेटिकली उसी स्कूल, उसी ट्रेडिशन, उसी कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट इवन आई हैव सीन हिम विलिंग टू लेट गो ऑफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो मेरे लिए बहुत इट्स बीन अ रियल जेम ऑफ अ टीचिंग, कि जो हम मिस्टिकल लिटरेचर में कई बार कहते हैं ना कि देयर इज नोवेयर टू स्टैंड, सो आई रियली सीन इट हैपन लाइव। एंड फॉर मी वो एक बहुत ज़्यादा विजडम का सोर्स रहा है, बहुत ज़्यादा लर्निंग का सोर्स रहा है, कि इस तरह से अगर मैं भी जो चीज़ मुझे आज बिल्कुल क्लियर लगती है, बिल्कुल लगता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो सही ही है, बट उसको भी मैं अगर टेंटेटिवली पकड़ता हूँ, हाँ मुझे आज लगता है सही है, संभावना है कि भविष्य में वो बदले। सो इवन नाउ व्हेन आई स्पीक टू हिम, ही स्टिल विलिंग टू से कि यार हाँ अभी तो मैं ये कह रहा हूँ, बट यू नो it might shift, and I'm willing to allow that to happen. And so for me that's been again a very significant thing. And finally is shrinkla mein the last point is for my type of character, मैंने ये पाया कि देयर हैज़ बीन द sort of, जिसको हम हार्ट ओपनिंग कहते हैं ना, द डेवलपमेंट ऑफ फेथ और डिवोशन। और इसका मैंने आप में से कई लोगों से शायद शेयर किया है ये बात, कि जो मेरे वाटपापोंग के समय था, लगभग 1 साल, वो एक्चुअली सबसे रिच समय था। और उसका एक कारण ये था कि उस दौरान ऐसी परिस्थितियां बनी कि ये जो सारा स्पिरिचुअल लाइफ में या धर्म में ये जो एलिमेंट होता है फेथ का, डिवोशन का, दैट बिकेम एक्सेसिबल टू मी, दैट बिकेम अवेलेबल टू मी। उसके कुछ प्रॉक्सिमेट कॉजेज थे, और मुझे लगता है कि जिस तरह से रामदास की टीचिंग्स हैं, या जो नीम करौली बाबा रिलेटेड सारे एस्केपेड्स हैं, स्टोरीज हैं, they became available to me। और तब लुम्पोर लियम भी वहाँ पे हुआ करते थे, और मैं ये देख पाया कि जो मेरे कुछ
in the morning hours I used to be basically on my own with him. जब मैं उनको अपनी कुटी में लेके आया करता था, I can now remember कि वो जो 5-6 महीने थे जब लगभग एकांत का समय उनके साथ हुआ करता था, and it's not like he was talking anything, but I could discern very significant openings in my own heart with respect to that element, those elements of the dharma that we can be quite skeptical about, या जिसके बारे में डाउट बना रहता है. और ये जो शिफ्ट हुआ, आई कुड देन सी सब्सिक्वेंटली जो मेरा एटीट्यूड था विद रिस्पेक्ट टू, फॉर एग्जांपल, कई चीज़ें जो हमें नहीं समझ आती हैं, या कई चीज़ें जिनके बारे में एक स्केप्टिसिज्म बना रहता है, या कई चीज़ें जिनके बारे में बहुत सवाल आते हैं. So the questions or the uncertainty, yeah, the fact that I don't understand something did not remain um, a source of did not remain a blockage, did not remain a source of doubt. तो इसको मैं एक बहुत सिग्निफिकेंट ब्रॉडनिंग अपनी धम्म रेपर्टोयर का मानता हूँ. And again, if we have time, I'll happily share an anecdote of how almost Mr. Dhar was succinct in this respect. But I'm already 15 minutes into the whole thing, so I'll move I on. think you can continue because then we'll not take a break. Yeah. फिर मैंने कुछ मिसलेनियस चीज़ें लिखी हैं, शेयर की हैं, जो मुझे ये सब मैं सोच रहा था तो ख्याल आया. एक तो ये कि मेरे जहन में अब ये ट्रांजिशन एक हुआ है कि मैं कोशिश ये करूं कि रादर देन डिपेंडिंग ऑन व्यक्तिगत टीचर्स एंड स्पेसिफिक ओपिनियंस टू ट्राई एंड गो टू द बुद्धास डायरेक्ट टीचिंग, जो कि थेरवाद कैनन में अवेलेबल है. और जब मैं ये करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि अभी भी मेरा सुत्तों के साथ एक इंट्यूटिव रिश्ता नहीं है. आई कैन सी दैट वेरी क्लियरली. इनफैक्ट मुझे याद है सुरेन जी कई बार ये कहते हैं कि धर साहब हमने पढ़े तो हैं, लेकिन जब आप समझाते हो इट्स डिफरेंट थिंग. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद मी. तो आई कैन सी कि अभी वहाँ काफ़ी ग्रोथ की संभावना है, ज़रूरत है. एंड येट मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड रियली स्टे विद द कोर टीचिंग, विद द की टीचिंग. तो मोर और लेस उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने अब धम्मा टॉक वगैरह सुनने लगभग बंद कर दिए हैं. जो ऐसी किताबें होती हैं जो कि किसी एक टीचर की अपनी कमेंट्री है, वो मैंने लगभग अब पढ़नी बंद कर दिया है. मोर और लेस नाउ रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू familiarizing myself with the core teaching as is available in our canon. एक चीज़ और, मुझे एक अच्छे फाउंडेशन की, कंसेप्चुअल फाउंडेशन की बहुत मदद हुई. एक्चुअली आई वाज वेरी लकी कि शुरू के सालों में इस तरह का एक्सपोजर हमारा रहा, जो हम संडे को मिला करते थे, कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो प्रोग्रेसिवली क्लियर होते गए. तो आई वुड रियली लाइक टू लाइक शेयर दैट विद एवरीबडी एंड आल्सो encourage कि उसको अगर हम करते हैं तो फिर बाकी की जर्नी सहज हो जाती है, सिंपल हो जाती है. सिंपल तो नहीं बट संभव हो जाती है. और उसमें एक चीज़ जो मैंने की है अपने लिए, वो ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनको मैं बार बार आई रियली फाइंड रेपिटेशन लाइक अ सुपर हेल्पफुल थिंग. एंड देन फाइनली जो कुछ रिसोर्सेज मैं अभी यूज़ करता हूँ, आई हैव लिस्टेड देम देयर. So yeah, thank you for listening, and really gratitude to everybody here in the group. I can see कितना valuable है. मैं हर बार अजान केवली को कहता हूँ कि हमारे पास ये जो सुबह शाम के सेशंस होते हैं, they really give like a very good container to the day. And I can't overemphasize how important it is for us, at least for me, to have this sort of a very clear boundary for the day. And so much gratitude to all of you, and thank you, Geeta, for taking this thing on and really enabling me to spend some time deeply thinking about my own journey of the last 12 years. Thank you, Bhante ji. Thank you for sharing. And उन्होंने, if you have more time and if you would like to share something, you can. I think I mean, it might be better, अब क्योंकि सक्षम ने वो डॉक्यूमेंट शेयर भी कर दिया है, कि if there are paths that people are interested in, maybe to go there, I mean, I can just keep talking, but so I think we'll open the floor for Q&A because I'm sure there will be a lot of questions and like wanted to know more about it. So
You can either unmute and speak or raise your virtual hand. Either way, whichever you're comfortable with. Okay, Payal has already raised her hand. Yeah, Payal, you can unmute and speak. भंते, एक आपने पॉइंट बोला था उसमें, जिसमें पेनी ड्रॉप मोमेंट्स में, उसमें एक बोला था, एक ऑल सेंस पेयर विज्ञानाजार विपाक चित्त. आई थिंक दैट इज व्हाट यू स्टेटेड, है ना? ये Yeah. वाले पे थोड़ा सा could you please highlight this a little bit more? I mean, do you want to get into the technicality of it, or do you want me to speak about how it impacted me? Both. Can you start with what does Vipak Chitta mean? हाँ, इसीलिए that's why I'm going to wag a finger at everyone. इसीलिए वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी वो बहुत बहुत जरूरी है. उसके बिना इट्स रियली ये नॉट पॉसिबल. पूनम इज रियली लाफिंग क्योंकि उस बेचारी को हर 15 दिन में मैं यही सुनाता रहता हूँ. बट बेसिकली टू सिंप्लीफाई इट, यू सी, इन एसेंस मसला ये है कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां प्रकट होती हैं एक्सटर्नली एंड ऑल्सो इंटरनली इन आवर माइंड, they are basically all fruits of past karmas. That's in a sense that's what it is. और मेरे लिए बहुत important उस समय, I'm not sure what was going on, and I don't even know why he said what he said at that point. That's something you should ask him. But at that point it was really just gold. All any sense of resistance, जैसे पायल जब मैंने आपको कहा था ना कि what's happening is not out of place, it's not wrong. It was really that, that really drove home. And I noticed उसके बाद जो life conditions हैं, उनका जो impact है या उनको जिस तरह से process किया जाता है, it's really shifted for me. But basically that's what the technicality is. And the interesting thing is कि जो हमारी कैनन है, जो सूत्र हैं, उनमें ये वाली बात बहुत एक्सप्लिसिटली इतनी अनइक्विवोकली नहीं आती है. दैट इज रियली अ गिफ्ट ऑफ अभिधम्म. और अगर आप टीचर्स कई को सुनोगे या टॉक सुनेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें बड़ी इक्विवोकेशन होती है. स्पेशली जो वेस्टर्न टीचर्स हैं उनको बहुत इस बात, रादर जो वेस्टर्न साइकी है उसको ये बात एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल है कि जो भी परिस्थितियां प्रकट हो रही हैं एक तरीके से हमारे कर्मों का नतीजा है. So for me that was like super. No, so this means the situation we are placed in is a result of past wo, it means what I can see or what I can hear or what I can infer is a result of past. सिचुएशन तो वही है ना. सिचुएशन कोई आसमान से तो नहीं गिर रही ना. मेरे सेंसेस जिन चीजों को एनकाउंटर कर रहे हैं वही तो मेरी सिचुएशन है. और मेरे सेंसेस वही चीजें एनकाउंटर करेंगे जो 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 मेरे सेंसेस एनकाउंटर करते हैं वो विपाक चित्त है. बेसिकली दैट्स व्हाट इट्स सेइंग. सिचुएशन तो वही है ना जो मैं एनकाउंटर करता हूँ. व्हाट इज द वर्ल्ड इज व्हाट माय सेंसेस मेक आउट ऑफ व्हाट माय सेंसेस एनकाउंटर, है ना. आई मीन दिस वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स, है ना, कि लोक क्या है. मेरे लिए लोक वही है, मेरे लिए कंडीशन सिचुएशंस वही हैं जो मैं अपने 6 सेंसेस से परसीव कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग विद माय माइंड. नहीं, मेरे को मेरा इंटरप्रिटेशन इसका थोड़ा अलग हो गया था कि अगर गार्डन में बैठे हैं और मुझे एक कुछ दिख रहा है, किसी और को कुछ दिख रहा है, तो वो पास्ट के, बट वो नहीं है, इसका मीनिंग वो नहीं है. मैंने उसको गलत इंटरप्रेट कर दिया. तो हाँ, सॉरी. हाँ, नो, व्हाट यू सेइंग मेक्स सेंस, बट या सॉरी, मेरा वो गलत था. Yeah, I mean we can have a larger discussion on धर्म जो है, जो बुद्धा की टीचिंग है, वो विपाक और कर्म के बारे में क्या बताती है. So we can do that. Maybe that's something that's helpful. But principally for me, just that thing that he said just at that time, it's just super helpful. I mean, part of what I'm trying to show in that page is that जो सही समय, if one is really alert, I have found कि उस समय जो मुझे सुनने की जरूरत है वो किसी तरह से मुझे सुना दिया जाता है. That's the point. जो मुझे सुनने की जरूरत है वो, that's what comes to me. That teaching manifests itself. I mean it's almost mildly mystical.
but not really. I mean, at least for me, it's been very. It's just been on the ball, on the spot. ये जो है ना, द सर्च फॉर हैप्पीनेस इज द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, ये धर सर ने टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा में बोला था, और ये उस समय मुझे बहुत लाइन ने इम्पैक्ट किया था, बट आई फॉरगॉट इट ओवर द इयर्स, बट दिस वाज एट दैट टाइम, इट अफेक्टेड मी आल्सो, सर्च फॉर हैप्पीनेस, ये वाला लाइन तो yeah I just feel very lucky कि मुझे ऐसा लगता है कि at some points the things that really need to stick really then go and stick, and so that's just very fortunate. Yeah, I know, I mean, he said that, yeah, I've been saying that forever, but maybe at that point I needed to be there and I needed to hear it, and I heard it and really just stayed basically. My question is over. Thank you. Yeah, Saksham, you can unmute and ask. My question is, can you tell a bit more about that point of miracle of love? ऐसा कुछ आपने लिखा हुआ है, उसके बारे में आपने शायद बोला नहीं. Yeah, that's yeah, it's very strange how these things happen. Miracle of Love is this book that Ramdas wrote. It's really old. It must be, I don't know, like 1970s या 80s की किताब है. And it's simply a collection of जो वेस्टर्न डिसाइपल्स थे ना नीम करौली बाबा के, उनके कहानियां हैं बेसिकली उनकी, या उनके एस्केपेड्स हैं, एपिसोड्स हैं. तो इसमें दो मजे की बात तो इसमें एक्चुअली एक है. अब इट्स ए थिक बुक, इट्स क्वाइट हैवी. तो जब मैं वापस जा रहा था, दिस मस्ट बी 2021 व्हेन आई हैड कम ड्यूरिंग कोविड, मैं वापस जा रहा था, एंड धर साहब हैड गिवन मी दैट बुक एंड मे बी वन और टू अदर बुक्स दैट वर मोर मेन स्ट्रीम धम्मा. तो मैं मिरेकल ऑफ लव को छोड़ के जा रहा था. आई वाज स्पीकिंग टू हिम जस्ट बिफोर आई लेफ्ट, और मैं अपने बैग्स पैक कर रहा था. तो जस्ट by chance I mentioned के अच्छा ये this is really too heavy and I'm going to leave it here. He said no, you take it. So I said okay, it doesn't matter that much. तो मैंने उसको पैक कर दी. And it really had such a transformative effect, such a transformative role in the remaining time in Thailand, like I described. जिस तरीके से वो narrative है, and I think that's really Ramdas's greatness. जिस तरह से वो उसको नरेट करते हैं, coupled with and I really think लुम्पो लियम की जो प्रेजेंस है उसका काफी इस पे इफेक्ट हुआ होगा. I can only speculate कि it really shifted this whole way of thinking कि केवल वही चीज केवल वही चीज what's the word, केवल वही चीज सही है जो कि मुझे समझ आए, है ना. As if my rationality, my logic, my ability to understand defines Dhamma, defines the Buddha's teaching. वो drop हुआ. And that for me was just so significantly liberating. So that's one part of it. दूसरी part उसकी ये थी कि जिस चीज़ को हम अभी slightly nebulous concept है ना, इसलिए इसको experience किए बिना शब्दों में समझाना थोड़ा मुश्किल है, but I'll try. जिस चीज़ को हम तो ये जो पहले मैंने डिस्क्राइब किया, यू कैन अप्रोक्सीमेटली कॉल इट द फैकल्टी ऑफ फेथ, है ना, जो मैं पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहा हूँ, बट आई हैव दिस कॉन्फिडेंस, आई हैव दिस फेथ कि अगर भगवान बुद्ध बता रहे हैं तो आई कैन एटलीस्ट टेंटेटिवली वर्क विद इट, टेक इट, वर्सेस बी ओवरकम बाय डाउट एंड स्केप्टिसिज्म. दूसरा जो इसका पहलू मेरे लिए हुआ वो दैट वाज जिसको हम एक हार्ट ओपनिंग कहते हैं. सो अब नाउ हाउ इसको बिल्कुल टेक्निकल धम्मा लैंग्वेज में क्या है ये आई एम नॉट सो श्योर, बट जो एस्पेक्ट्स ऑफ डिवोशन है, द विलिंगनेस एंड द एबिलिटी टू be at ease with things that basically I don't follow, I don't understand, that don't make sense.
was basically what I thought became available to me that point onwards, and I attribute it principally to जिस तरीके से रामदास इन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स लाइक आई कीप सेइंग जो लुम्पुर लियम की प्रेजेंस थी, जो भी वाट पापोंग की कंडीशंस हैं. And again, I think the catalytic role that Dharsabad had was to say that take that book basically. And of course, he introduced Ramdas to us. Even 2012 से हम कुछ ना कुछ talks सुनते आ रहे हैं. So for me that was very helpful. I don't know if that answers Saksham, and honestly, because some of these attributes are so experiential that I don't frankly myself have the vocabulary to fully describe what I feel, what I experience. Yes, Bhante, thank you. Yes, Shivendra, you can unmute and speak. Sure, thank you. Pranam Bhante ji, thank you for sharing your Dhamma journey, and उसको सुन के ऐसा बहुत easily आपने उसको शेयर किया, बट आई एम श्योर कि उसमें बहुत मेहनत और कड़ी मेहनत परिश्रम हुई होगी, एंड उससे मुझे काफी इंस्पिरेशन मिल रही है, और आपके परिश्रम से हमको बहुत जिस प्रकार आप इंसाइट शेयर करते हैं, मदद करते हैं, उससे बहुत ही लाभ हुआ है. सो थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग एंड शेयरिंग दी स्टोरी. एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग थिंग आई फील, जो आपने अभी मेंशन किया, वो द्वेष, फॉल्ट फाइंडिंग वाली टेंडेंसी रही या है जिस पे आप अभी भी काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी you're helping so selflessly. You're always available, and seeing you be there for parents unconditionally, always available for anybody anytime. Bina, sometimes the person is not available but you are there. So with that fault finding or that dvesh wala thing, uske saath ye kaise, how did you do that? Because that's very inspiring for me, and I want to do that also, because I feel aversion day-to-day basis for people, and that's so I want to do that. So some suggestions or your say on it. I mean, it's a good point. And sometimes मुझे भी ताज्जुब होता है कि अरे ये भाव कैसे जाग रहा है ना? Because one is so used to जैसे आप कह रही हो ना, the भाव of resistance या भाव of aversiveness या the भाव of irritability and annoyance, and instead you find, at least I find, कि oh, actually there is at least some level of unconditionality available. I wouldn't say it's perfect. At least there is some level of empathy available, है ना? तो जैसे मैं समझता हूँ ना, आई थिंक दिस इज व्हाट गिव्स मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगर हम जिस तरह से प्रिस्क्राइब किया गया उस तरह से मार्ग पे चलें, तो वास्तव में जो प्रिंसिपल संखार हैं वो ढीले पड़ते हैं. इट्स एग्जैक्टली फॉर मी इट्स ग्रेट कंफर्मेशन कि भैया करते चलो, है ना? और मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि भाई अगर मेरी जैसी स्ट्रॉन्ग एवर्सिव टेंडेंसी भी अगर हल्की हो सकती तो लगभग कुछ भी संभव होना चाहिए. दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है ना, कई टीचर्स बताते हैं ना, हमने भी सुना है कि यू ऑल्सो हैव टू कीप द प्रैक्टिस एंड द मंजिल आर द सेम. तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से एम्पथी और अनकंडीशनैलिटी और वो सारे भाव जाग रहे हैं. जब वो स्वतः नहीं जाग रहे तो हम एफर्ट करते हैं, अच्छा भाई यहाँ ये करना उचित है. सो यू फेक इट अंटिल यू मेक इट. वो भी चीज़ है. जैसे कई बार कहते हैं ना कि भाई मैत्री जागेगी इवेंचुअली, बट जब तक नहीं जागती है तब तक आई मेक दैट एफर्ट. सो देयर इज ऑल्सो दैट लेवल ऑफ एफर्ट इन्वॉल्व. तो जब हम राइट एफर्ट्स देखते हैं तो उसमें बहुत क्लियरली ये आता है ना, जो कल मैं याद सुबह पढ़ के सुना भी रहा था.
कि अगर कोई अनहोलसम माइंड स्टेट है देन वन रियली मेक्स एन एफर्ट टू एक्सपेल इट and to act with a mind state that is the contrary of it. So it's not that it's always available, and that's exactly the effort. अच्छा अभी आई डोंट फील एनी मैत्री टैत्री एनीथिंग, लेकिन इस परिस्थिति में एक फ्रेंडली जेस्चर अप्रोप्रिएट है, सो देन वन डूज दैट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द एफर्ट इज, और क्या है एफर्ट. सो नाउ आई डोंट नो if that answers the question, but अगर हम एक बार पहचान लेते हैं कि there is aversiveness, then one is continuously trying to um, act opposite to that. Sure, it does. It does answers. Thank you so much. Immense gratitude to you. Thank you. Bhavna ji, you can unmute and speak. Yeah, Bhante ji, thanks for sharing your experience. So one question, what motivated you to ordain? Was it search for real peace, real happiness? What was that? The search for happiness is the cause of unhappiness. ये तो किस्सा है सारा, है ना. But नहीं, और देखो एक we should, I have now learned कि हमें ऑर्डिनेशन को या जो मोनास्टिक फॉर्म है उसकी ऑफ कोर्स भूमिका है, पर द रियल सवाल इज कि व्हाट मोटिवेट्स वन टू ट्रूली वॉक ऑन द पाथ टू धर्म, दैट्स द प्रिंसिपल क्वेश्चन. जो मोनास्टिक फॉर्म है वो उसका एक जरिया है, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है. एंड आई थिंक मेनी ऑफ अस नाउ रियलाइज दिस कि इन एंड ऑफ इटसेल्फ मोनास्टिक फॉर्म हमें नेसेसरली धर्म में आगे बढ़ाता है, ये ज़रूरी नहीं है. सो आई वुड इनवाइट कि हम अगर सवाल ये है कि जर्नी को क्या मोटिवेट कर रहा है, फेयर इनफ, दैट्स अ फेयर क्वेश्चन, एंड मे बी दैट रियली शुड बी द प्रिंसिपल इशू, एंड सो दैट्स व्हाट I'll focus on. Very early on ये तो मुझे जाहिर हो गया था, and like I described कि my karmic conditions are actually quite conducive, so things in life would more or less fall in place and they continue to fall in place. But मुझे जाहिर हो गई कि the sort of the target kept shifting. So when such and such thing would be aspired for, it would manifest and then the target would shift and so on and so forth. So I think there was that maybe early recognition of the limitations of worldly happiness, worldly success. That was one. And then of course just हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, and I think I was very fortunate कि जो adverse conditions थी that really were used as a means. ये जो ordination वाला मामला आया, that was in one of such watershed times when it appeared कि this is an opportunity now to really basically stop working and live this life full time. And it wasn't like a clear, simple, easy decision. It was somewhat evolutionary. But just staying now coming to the issue of ordination, I think ये बात भी धर साहब ने बहुत पहले कही थी, and it's really stuck with me कि जब तक हमें डाउट है ना, जब तक मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई शुड आई ऑर्डेन और नॉट ऑर्डेन, तब तक आई शुड नॉट. And if a point comes when I no longer have doubt, then I'll myself go up and say, okay, it's quite clear to me and I'm going ahead. That's basically, I reached that point, and so it became quite clear. And yeah, so again, I don't know if that answers the question, but that's how it was. Nandesh, you have to keep your mic a little closer. Close or करीब लाऊं? Yeah, okay. now this is fine. Yeah, sure. Yeah, sure. Yeah. So please go ahead and interrupt me and let me know if it's not so clear. Thank you, Bhante ji. SPG, you can unmute and speak. Thank you. Bhante ji, I basically want to express my words of gratitude once again.
and all that you have said today, the way you organized the presentation for us, your ability to organize things in such a beautiful manner has always impressed me, and today it was again the same situation. For your presence in this group, together with Professor Dhar, has been enriching our learning from day to day. I'm very, very grateful for your presence. So basically, I wanted to convey my gratitude, and also for one more reason. I think today you said a few things which probably I needed to hear and have an impact on. I think probably that might have happened. I don't know. Time will tell. Thank you very much for making Yeah, those. very good, Surenji. Yeah, thank you. Likewise, I've found just so many things that happen in this group here. Just so helpful. And like I said, the things that are most appropriate for us do manifest. If I'm alert enough, then I'll catch it. So yeah. Thank you. Yeah. Rajendra ji, you can unmute and speak. Bhante ji, Anumodan, Pranam. First of all, thanks a lot for having, started the Pali chanting sessions, and I'm so lucky that I could be part of it and learned a lot at that time. Now, coming to your presentation, I have to submit two things, which there's a point 4 and point 5. And this, whereas point 4 suggests that willingness to not to be wedded to any tradition, concept, school, teacher, etc. And the point 5 is saying development of faith and devotion. Now, which is Shraddha. So how do we do a balance in these two, Because yes, at some stage when one reaches there, one can say that there is no need to be wedded to any tradition or concept like Dharsab. But for us, and for you, I just wanted to know from you, because it has meant opened some gates for you. So how do you think, what is the, what should be the litmus test for knowing that this is the time now I should have that confidence that I'm not wedded to any tradition or faith? Rajendra ji, yeah, thank you for saying that that's an important thing, and thank you for bringing it up so it can be clarified. मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिशन की भूमिका नहीं है. मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी स्कूल की भूमिका नहीं है, किसी कॉन्सेप्ट की भूमिका नहीं है, किसी टीचर की भूमिका नहीं है. द ऑपरेटिव वर्ड देयर इज वेडेड, है ना? Wedded. वेडेड, दैट्स द ऑपरेटिव वर्ड. कि मेरा डॉगमैटिक पकड़ाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है किसी भी कंडीशन चीज से, संस्कृत चीज से. ट्रेडिशन, टीचर, स्कूल, ये सारे ही जो हैं वो कंडीशनड है ना. तो है ना, मेरा सबमिशन ये था कि at what stage does one get this feel that now he has to get out of it? नहीं, गेट आउट की बात ही नहीं हो रही ना. वी आर नॉट, दैट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि ट्रेडिशन, टीचर, कॉन्सेप्ट, स्कूल को अबैंडन कर दिया जाए, उसके प्रति वेडेडनेस को या तन्हा को अबैंडन किया जाए. देयर इज अ डिफरेंस, है ना. सो टेंटेटिव, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, टेंटेटिवली अभी हमारी एक समझ है ना, कि इस तरह की डॉक्ट्रिन है या इस तरह के का स्कूल, इस तरह की ट्रेडिशन उचित है. ओके, वी कीप वर्किंग विद इट. अगर ऐसी परिस्थितियां, ऐसे एविडेंस, ऐसी कोई घटनाएं, ऐसी कोई चीजें सामने आती हैं कि लगता है कि इट्स नॉट सो मच अनुकूल with my growth, with dharma, etc., then one is willing to let it go, let it be. If that happens, if it doesn't happen, great, we keep following it. कोई दिक्कत नहीं है. So it's not the abandoning of conventional structures. It's the abandoning of a dogmatic holding on to those structures. There is that difference. There is that difference. More importantly, it is this state of mind
जो किसी भी चीज को फॉलो कर रहा है या किसी भी चीज पे आधारित है इस टेंटेटिवनेस के साथ कि भाई अभी ये ठीक लग रहा है ना, एंड सो आई फॉलो इट वर्सेस भाई यही सही है फॉर eternity. So that was what I saw in how he was, um, how he continues to, associate with conventional structures, and that was just amazing for me. And yet one can have deep, जैसे मैंने कहा, respect, faith, devotion, उसमें कमी हो वो कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है. Thank you. Thank you. जेके शर्मा जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. Thank you, Bhante ji. I am grateful to you, and I am lucky to hear you also. I will like to understand that how did you discount the fault finding habits? Just you explain the benefits of it, but I am more interested in how to reduce it. The method, did you use the antidote method or breath method, or did you use any particular method for discounting it, or it generally came automatically? I would like to more understand about it. Thank you. जी जी शर्मा साहब, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यार ऑटोमेटिक कुछ होता नहीं है, है ना. तो ये चीज तो हमें बिल्कुल बांध लेनी चाहिए. अगर हमें ऐसा लगता है ना कि कुछ सो एंड सो मैं ऐसा ऐसा करूँ हमें सो एंड सो अपने आप हो जाएगा, ऐसा इट्स जस्ट नॉट देयर इन द टीचिंग्स एट ऑल. जैसे मैंने हल्का सा हिंट किया ना, इन अ टेक्निकल सेंस द मेथड इज sharpening of mindfulness and then application of the element of panya. स्पेसिफिकली जो राइट एफर्ट के वो आयाम हैं जहाँ पे कि हम अनहोलसम माइंड स्टेट्स जो उठा है उसका प्रहान करते हैं. तो अब हम कैसे करते हैं, दैट्स समथिंग वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स, कि जब एवर्सिवनेस उठेगी that is a form of suffering. So if one is very sensitive, तो इवन जो मन पे उसका प्रभाव होता है वो डिटेक्ट हो जाता है. अगर सेंसिटिविटी थोड़ी हल्की है तो जैसे कि बार बार डिस्कस हो रहा है, इन द बॉडी इट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ. नाउ once the mindfulness is strong enough that it picks up some halchal, some gadbad, what I do is I examine कि अभी इस व्यक्ति के सिलसिले में, परिस्थिति के सिलसिले में, घटना के सिलसिले में मेरा मन क्या कमेंट्री दे रहा है. एंड लाइक इज द दोष चरित्र का जो वो होता है वो बेसिकली उसमें जैसा कि नाम है ना, फॉल्ट फाइंड करेगा. ये ठीक नहीं है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये हमेशा ऐसे ही बकवास करता रहता है, या ये जगह ऐसी क्यों है, इसमें ये कमी है ना. इट गिव्स यू ऑल दिस. सो मैं उसमें करता ये हूँ, मैं लगभग 30-40-50% उसमें से मैं माइनस कर देता. सो इफ माई माइंड इज टेलिंग मी इट्स so terrible and so forth, so then I then apply some approximation and say, oh, maybe it's not that terrible, maybe it's just mildly, mildly bad, mildly unpleasant. और फिर उसके अनुकूल अगर कुछ कन्वेंशनली करने की जरूरत है तो उसको मैं करता हूँ. बट मेनली दिस इज रियली मेनली द मेथड. अब इस पे इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन जिस तरह से जो एट फोल्ड पाथ है ना, जो राइट एफर्ट वाला आयाम है वो इसमें दैट इज वेरी दैट्स बेसिकली द ऑपरेटिव पार्ट. Obviously, as we understand, right effort won't appear magically. It's an outcome of sense restraint, of some amount of collectedness, and of regularly checking
on one's own predominant mental commentary. So it's really mostly a self-investigative process. So often my formal sessions are consisting on, और पहले तो मैं इसको लिखा भी करता था. One of the things I found very helpful is कि जो मेरी अगर कोई बहुत strong mental commentary चल रही है, so to just write that down. और उस लिखने की प्रक्रिया में मैंने ये पाया है कि जो किसी भी स्थिति के बारे में एग्जैजरेटेड क्रिटिकल कमेंट्री है वो स्वतः ही पकड़ी जाती है जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन बिकॉज दैट्स रियली स्लोड द माइंड डाउन. So that's something that I've found very helpful in a practical sense to really write things down. So again, I don't know if that helps, but that's really what I do. जो आप ब्रेथ वगैरह की बात करें ना, ऑफ कोर्स दे आर हेल्पफुल, क्योंकि बेसिक कलेक्टेडनेस, बेसिक ट्रैंक्विलिटी के तो बिना ये सब तो नहीं हो सकता. वो तो उसके फाउंडेशंस हैं, तो वो फाउंडेशनल काम तो खैर करना ही है. एटलीस्ट फॉर समबडी लाइक मी विथ सो मच एनर्जी, अगर मैं ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी और कलेक्टेडनेस प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो सब तो हो ही नहीं पाएगा. शर्मा जी आप म्यूट पे हैं. Yeah, sorry. Basically, it is the softness of this खंडास and जो मन की थिंकिंग है, जो चित्त में है अपने में, उसको सॉफ्ट करने का प्रक्रिया है बेसिकली, isn't it, sir? उसको पहचानना कि यार ये थिंकिंग है, ये सत्य नहीं है. Yeah, I got है it. ना, मेरा मन जब कहता है यार ये बिल्कुल होपलेस, wait, really? Is it really hopeless? So just questioning itself just slows the whole process down. Versus totally be caught with, हाँ ये तो ऐसा ही है, and then act out of it. And it's a lifelong process, I think so. It's many lifetimes long process. Yeah. अगर life long में हो जाए तो one is super fortunate. But I can see already, जैसे मैं शिवेंद्र को कह रहा था ना, कि हम शुरू भी करते हैं, then there is already a dent. So it really gives you confidence कि हाँ यार करने से होता तो है, but मतलब करना पड़ता है. One has to do it. अगर मैं केवल इसको पढ़ के कंसीव करके छोड़ दूंगा तो खैर उसका कोई बहुत लाभ नहीं. So basically I understand what we do here in these sessions is कि मैं एक चीज समझता हूँ, फिर मुझे उसको जीवन उस तरह से जीना है. That's where the rubber hits the road. That's where it gets really difficult. Thank you, sir. Thank you. केशव जी आप अनम्यूट करके पूछिए. Express our deepest sense of gratitude to Bhante ji for giving a very inspiring methodological teaching of Buddha and his journey to the Dhamma. We also pay great respect to your parents who has spared the lowly son for the spreading the Dhamma. We would like to know what were the situations when you have taken the decision to become a part of the monk, leaving the family comfort zone. What was this? Whether the parent has willingly given the permissions or you have convinced them to go for this thing? This was wanted to know the things. Yeah, कामड़े साहब, थैंक यू. जैसे मैंने वो जो कार्मिक गिफ्ट्स थे ना, उसमें जो मैंने तीसरा पॉइंट लिस्ट किया था ना, कि कंडीशंस कंड्यूसिव बनी हुई हैं, बनी रहती हैं, और जो हमेशा से मेरे पेरेंट्स का रुख रहा है, not only towards this, but generally my life has been quite bohemian, by conventional standards. And I've always had near complete, support and encouragement towards these things. So similarly, जो धर्म की बात है या जो ऑर्डिनेशन की बात है, I was very lucky that they were always very, it was quite obvious to them कि it's something wholesome. And you see, it's also very fortunate कि शुरू से ही जो हमारे senior teachers थे, it so happened कि my parents were either meeting them or they were
Ajahn Sumedho, Ajahn Anek, Ajahn Liam, when they came to India, or um, uh, they were consistently saying things like, it's okay to go forth. And very specifically, I remember Lumpur Liam ने ये कहा था कि he said it to my parents when they came to meet him जब वो यहाँ 2019 में आए थे कि जब आपको जरूरत पड़ेगी then he'll be there for you, he said that quite clearly. So so yeah, I mean, I think basically जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी तरफ से और जो पेरेंट्स हैं दोनों की तरफ से it has just always been very conducive, and it's worked out exactly like that. As जैसे ज़रूरत पड़ी, it was possible for me to stay, and uh, the senior teachers ने इतनी latitude दिखाई है, which is quite it doesn't usually happen in our tradition. So yeah. और को कोई सवाल पूछना है या okay, just to sum up, I just want to ask one more thing, Bhante ji. I just want to know, after your ordination, you were living a monastic life. You still, after you come back, you're here in India now. Your daily chores, like, how is it making difference? Because it's not, now you have to deal with people outside the monastic life. I'm not sure if I'm framing it properly, and with some kind of challenges and everything. When you look at yourself then and now, what is your journey? Though you have explained everything in one line, like, do you still miss that monastic kind of like, I should be there in Thailand now, or where I'm here right now is the right thing, which has happened to me. How do you look at it in terms of when you're dealing with people, especially? गीता, ये वो वाली बात है ना जो ऑल सेंस फियर विज्ञान विपाक चित्त है ना. आई वाज वेरी लकी, जैसे मैंने शेयर किया ना हल्का सा कि इवन बिफोर 2018 से पहले भी जब मैं गया, एक तरीके से एक बहुत अच्छी फाउंडेशन अवेलेबल थी. तो फॉर्चुनेटली ये भाव कभी नहीं रहा कि there is something not right with the situation that I find myself in. So I think by that time that shift had already happened. So it's not, I mean, set aside the fact that you're not in a monastery. ऐसा नहीं है कि monastery is all milk and honey and everything is perfect and so on. ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो वहाँ पे भी अगर कोई रेजिस्टेंस आती थी तो ये भाव जगता था कि really that situation is there for a reason, or rather I find myself in that situation for a reason. So what's the wisest way to meet that परिस्थिति? So मैं ये नोटिस कर रहा हूँ that once that shift happens, तो फिर इस तरह का सवाल एटलीस्ट मेरे लिए नहीं उठता है ना कि I wish I was somewhere else. That thing has really not arisen in quite some time. मैं ये भी पाता हूँ एक्चुअली कि जो 4 साल वहाँ बीते, they were actually very good ट्रेनिंग. खास करके अब जिस तरह की स्थिति फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ केयरिंग फॉर माय फादर है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो जो 1 साल लुम्पुर लियम के साथ बीता, इट वाज ऑलमोस्ट प्रिपरेशन फॉर दिस. इट वाज एग्जैक्टली लाइक दैट. जब हम ऊपर ट्रैकिंग करते हैं, जैसे सक्षम ने किया, उसको पता है कि यू आर मोर और लेस टोटली फोरफ्रंटिंग द अदर पर्सन, है ना. दूसरे व्यक्ति की क्या दिनचर्या है, क्या ज़रूरतें हैं, दैट्स रियली व्हाट इज इन द फोरफ्रंट, एंड योर ओन preference, your own comfort, convenience is number 2. So it's almost as if that 1 year was preparation for this period now that I'm spending here. So मैंने कई अपने टीचर्स के साथ शेयर किया कि भाई, far from the monastic form being a hindrance in currently living, for example, in my parents' house and so on and so forth, it's actually a great aid in being able to play the current role that I'm required to play. So for me, it's just basically perfect preparation
this phase, for this phase of life. In fact, मुझे कई बार ये लगता है कि जैसी चीज़ें सीखने को मिली उन 4 सालों में वहाँ रह के, यदि वो नहीं हुआ होता तो ये जो आज परिस्थिति उठी है in relation to my parents, उसको I wouldn't have been able to meet that परिस्थिति. So it's just worked out actually quite well. And so it's just a reconfirmation of that line that Mr. Dhar had said. Basically वही चीज़ें सामने आ रही हैं जिसकी कि हमने बीज बोए हैं. So we meet them as best as we can. I mean, it's not as if one is I'm able to act currently in these conditions perfectly. ऐसा बिल्कुल नहीं है. But conditions के प्रति resistance, I mean, होती भी है तो it goes away. So one is not really reeling and ranting about why am I here and why am I not somewhere else. So that shift happened. Thank you so much. Gratitude. धर सर आप कुछ कहना चाहोगे? And सवाल sorry, Poonam, you want to say? You want to ask something? आपका एक्चुअली भंते जी, मैंने एक अभी आप लास्ट विजिट किए थे संघारामा में, तो मतलब अब हर चीज मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बट मेरे को जब धर सर ने जब आप लोग मॉर्निंग में मतलब आप आए तो आप लोगों के पैर जो साफ किए थे धर सर ने, that point of time, what was your feeling? I mean, what was there? It's not the first time he's done that ना. देखो, एक चीज इन्होंने बहुत पहले हमें सिखाई थी. ये तो बहुत बहुत शुरू की इनकी वो थी. I think almost 2013-14 की बात होगी. He was really pushing this idea कि हमें अपने roles को we shouldn't take them so seriously, है ना. तो उस परिस्थिति में the and also like the bowing that happens, है ना. Is somebody bowing to me? No, not really. Isn't it? It's really to the robes, it's to this lineage जो चलती आ रही है. तो अगर मैं अपने आप को इतना सीरियसली ले रहा हूँ कि भाई मेरे पैर साफ हो रहे हैं, है ना, या मुझे बाव किया जा रहा है, तो यार फिर मैंने कुछ समझा ही नहीं ना, तो शुरुआत ही नहीं हुई. तो I think very early on this issue of and I don't remember what we were discussing, but ये रोल्स वाली बात बार बार आती थी और वो तब घर कर गई थी. So since then it's really not been such a big struggle in terms of roles. तो जिस परिस्थिति में जो रोल अप्रोप्रिएट है उसको हम निभाएं, and just not take that so seriously. So in that sthiti, he was or there was a lay person जिसको जो मोनास्टिक फॉर्म है उसके प्रति एक आदर है, और उस आदर को जाहिर करने का एक तरीका is to wash feet once once somebody comes back. So that's how I saw it. I mean, I think that's what our teachers or he would himself expect us to see. जी, आपने हैंड रेस किया था. हाँ, मैं बस एक धमा क्वेरी नहीं है, जिज्ञासा मैं जानना चाह रहा था कि 2005 में जब आपने ज्वाइन किया उसके पीछे क्या नज मिला था आपको? हाउ डिड यू गेट It was what did you serendipity get actually. us? We had a neighbor who was actually quite pushy, So partly I went to just get him out of my hair. So, but just serendipity. तब कोई ऐसी बहुत strong वो नहीं थी. I mean, I had some vague attraction to these concepts, but nothing very. At least मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा after so many years. Okay, Bhante ji, thank you. I have a similar curiosity. How did you meet Professor Dhar? Can you tell a bit more about that? मैंने बताया ना कि उस समय पे, और शायद अभी भी जो विपस्सना सर्कल्स हैं नॉर्थ इंडिया में, उसमें अगर आप पूछते कि भाई
मैं किससे मिलूं, किसको मिलूं, that they typically direct you to him. I think it still happens from what I know. So I kept hearing of this mythical form, and I kept trying to find him. So those were the days when mobile phones वगैरह नहीं होते थे ना. So somehow I don't know, I didn't get a land, or maybe I got a landline, I couldn't get him, or whatever. And also for him it was a period of transition. So but it was quite common, and I think even now if you go to centers and you ask, then you'll probably be given his name, I suspect. Thank you. भारती आंटी, आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे नहीं कहना है. Thank you. Sir, would you like to say something? Firstly, on behalf of Bharti Didi, I'll say something with her permission. And that she had told me that she had a vision that Arpan would become a monk when he was a small child. So she was mentally prepared, and this is going to happen. That's one thing. Regarding my interaction with Arpan, I think I must thank him for that intense interactions. I think we spent hours discussing, and he would not agree, and we'd have intense discussions. And that helped me a lot, actually, to recrystallize, reformulate my thought processes, because when you're convinced about something, it's difficult to explain. So I learned a lot in really interaction with him, and my gratitude for that. And I've seen him transform from a highly rational, intellectual, quote unquote, secular person to a person. And the greatest transformation I saw him, a rising of devotion. That was really the last thing with which I tried to point out to him the need for that, and he really did so well. We went around trips which would be heretical for a Vipassana meditator to do. We went around Mathura, Vrindavan, Kanchi, Jageshwar, and all kinds of places, just to pay our respects to the teachers who have benefited us, whose teachings have helped us directly and indirectly. And he was with me in those trips. It was really marvelous to interact with him, and it continues to be that even now. You might have seen when he asks questions, sometimes we have quite intense discussions, and they continue beyond the session also quite often. So my gratitude to you, dear. Thank you very much. Thank you, sir. Bhante ji, I just want to ask you one more thing. You stayed with Lumpur Liam, as you mentioned. What's your key learning? If one thing, if you want to just say, which is going to stay with you forever. So do you like to, like, I just wanted to know, like, you know. गीता, मैंने शेयर किया ना कि देखो एक चीज मुझे, एंड आई एम गोइंग टू बी केयरफुल ये मैं कैसे कहता हूँ, है ना, इन टर्म्स ऑफ धर्मा कंटेंट, ऐसा कुछ मुझे नया उन 4 सालों में नहीं एनकाउंटर हुआ जो कि मैं पहले से यहाँ से सीख के नहीं गया था. तो एक तो ये बात है, ठीक है. बट बिल्कुल जैसे जैसे मैंने अभी शेयर किया, एक तो इन अ प्रैक्टिकल सेंस जो हमारे ट्रेडिशन में ये जो ऊपर ठकिंग का सारा मामला है, दैट्स जस्ट अमेजिंग. अगर हम उसको सही तरीके से ले पाए तो वो जिस तरीके की भाव सिखाता है, जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. मैं कह रहा हूँ ना कि अब जो मुझे ये यहाँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माई फादर जो कंडीशन है, is basically it's possible to do that just based on that whole experience. And then like I shared, ये जो सारी
devotion based heart opening wali hai. I in part attributed to just Lumpurliam's presence. Sometimes हम सोचते हैं ना कि भाई बंदा टीच कर रहा है, मुंह से कुछ बोल रहा है और मैं कुछ सुन रहा हूँ. Sure, वो एक स्तर पे है. But sometimes I think it's also at a non-verbal level, and I certainly have have that have that faith कि उनकी presence का उस process में योगदान था. थैंक यू. किसी को कोई सवाल है या कुछ पूछना है या कुछ कहना है? Thank you so much, Bhante ji, for sharing your insight, enriching discussion. So I can request for closing. Over to you. Okay, so जैसे कि पिछले कुछ दिनों से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि हम ऐसा एस्पिरेशन भी बनाएं, और जो सटल सटल फोर्सेस हैं, जो सटल बीइंग्स हैं, वी कैन मे बी ऑल्सो मेक सम सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट कि हमारे लिए जो may the right teachers manifest. So that could be one. और साथ ही साथ हमारे मन की स्थिति ऐसी हो कि उन टीचिंग्स को और उन टीचर्स को हम ग्रहण कर पाएं. मे बी in the context of today's conversation, that's the appropriate aspiration to make. भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वभूतानुभाविनः सदा सुखी भवन्तु ते. भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभाविनः सदा सुखी भवन्तु ते. भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभाविनः सदा सुखी भवन्तु ते. अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादयामि. स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि. सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि. ये भंते जी को 3 बार नमन करें. नमन, नमन, नमन. Thank you. Thank you. Wait, I just have a second. It just occurred to me, पूनम, जो आप वो जो पैर धोने वाली बात कर रही थी ना, I think एक और चीज जो मैंने देखी और सीखी कि ये संभव है, और ये बात मेरे में पूरी तरह से नहीं आती ना. सो आई एम सेइंग दिस विद द राइडर. आई हैव जस्ट सीन दिस in how Mr. Dhar has conducted himself. जो रोब्स है ना, जो मोनास्टिक फॉर्म है, जो जो सन्यासी कॉन्सेप्ट है, उसके प्रति जो हमारी एक जी डॉक्टर साहब कैसे हैं? उसके प्रति जो हमारा आदर है, या रिगार्ड है, जो रिस्पेक्ट है ना, दैट कैन be separated, that can be divorced from
the individual that happens to be wearing those robes. That again for me was just so fantastic. He's actually separating जो उस व्यक्ति कोई भी व्यक्ति के सिलसिले में जो मेरा एक mental वो है, it need not impinge upon my what should be my dharma attitude towards the robes. So we can separate these two out. So in addition to the issue of roles, I thought this was another thing that I picked up and I learned. So but just should add that. Thank you. Yeah. Okay, thank you. Yeah. See you. Thank you all. Thank you for joining. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Namaskar. Thank you very much. Thank you.